एनएसएस प्रोग्राम को-कोऑर्डिनेटर एवं दर्शनभाई पुरोहित અને ઓનલાઈન હાજર રહેલા આમંત્રિત મિત્રો સભ્યો વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી આયોજિત અને ભારત વિકાસ પરિષદ તરફથી આયોજિત આજના ઓનલાઈન વેબિનારમાં રીડિફાઇનિંગ ધી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇન યુનિવર્સિટીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને આપ સૌનો વધારે સમય ન લેતા હું ઠાકોર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આ વેબિનારની પ્રોગ્રામને આગળ વધારે। जी धन्यवाद जयदीप भाई चौधरी सर। कार्यक्रम ने आगे વધારતા ભારત વિકાસ પરિષદ ના સુરત મેનના અધ્યક્ષ તરીકે કાર્યરત છે એવા માન્ય શ્રી સીએ શ્રી રૂપિનભાઈ પચ્ચીકર જેવો આપણા આજના વક્તાનો પરિચય આપશે અને ભારત વિકાસ પરિષદ તરફથી સ્વાગત પણ કરશે। પચ્ચીકર સર। Thank you, Bharatbhai. It is indeed my proud pleasure to welcome you all in this thought-provoking webinar on the vibrant and vital subject, namely redefining the education system in university. Respected Vice Chancellor of Veer Narmad South Gujarat University, Dr. Kishore C. Chavda, learned speaker of this evening, Dr. Shiv Narayan Kalia, Vice President, TriStar Life Science Private Limited, Mumbai, TriStar Group of Hospitals, Registrar of the University, Dr. Jaydeep Chaudhary ji, Coordinator, Dr. Bharat Thakur, Coordinator, Dr. Kiran Pandya ji, all the office bearers of the Bharat Vikas Parishad and all the members of the Bharat Vikas Parishad and all the valued spectators of this and participants of this webinar and members of the BVP, you are welcome to this webinar. This webinar is organized under the joint auspices of IQS Cell Rashtriya Seva Yojana, Veer Narmad South Gujarat University and Bharat Vikas Parishad Surat, Maine. Well, friends, our beloved Prime Minister said at the time of launching a new education policy of the country that this education policy will help the student in their all-round development. With the root of our culture, humanity and equality, we will make Indian students a global Indian. हम जब यूनिवर्सिटी का ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी में करो या गुजराती में करो, तो हम यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं। तो सवाल ये होता है कि आर वी प्रोड्यूस अ स्टूडेंट जो विश्व के लायक हो? यही सवाल $100 क्वेश्चन है। मैं मानता हूं कि ये यूनिवर्सिटी is just like a manufacturing company and they produce certain products and students are the vital subject product of this university, and therefore I am of the opinion that whereas we live in this global village, our student should have all the quality which is required by the world, and the new education policy is the answer to this question. This webinar is arranged in this context. Well, ladies and gentlemen, our Honorable Vice Chancellor, Dr. Chavda ji, is a simple man with a wide vision. Recently, in one of the book releasing seminar on new education policy, he declared that we in Narmad South Gujarat University will start the various certificate courses for 6 months, which can help the common man to get their livelihood. This is a fantastic idea. For that, our worthy Vice Chancellor, Dr. Chavda ji, deserves special compliments. The new education policy for the higher education is more vibrant and flexible than earlier, and therefore the practical approach to the education will definitely help the students and community at large. Well, friends, we are lucky to have a learned faculty for today's webinar. Today, we have with us learned speaker, Dr. Kalia. Allow me to introduce before you Dr. Kalia. Dr. Shiv Narayan Kalia is a Vice President, TriStar Life Science Private Limited. He is a leading healthcare professional
with over 10 years of experience at senior leadership position in various healthcare organizations. He is currently working with TriStar Life Science Private Limited as a vice president of the group. TriStar is one of the best performing startups in hospital segment in western region of India. Dr. Kalia handles the complete management and operation and is responsible for the overall profit and loss of the healthcare division. Dr. Kalia has many firsts to his name. He was the youngest ever to be appointed as a medical superintendent in the country in 200-bedded teaching hospital and institute category, the feat which he achieved at the age of 25. This is fantastic. He has qualified various civil services examination before joining the private healthcare sector. He also qualified for the post of Deputy Superintendent of Police in Haryana in 2009. He completed his bachelor in dental surgery, BDS, in 2008 and then pursued postgraduate diploma in healthcare management from Apollo Hospitals. He has also held a postgraduate diploma in quality in healthcare. He is assessor for NAP. Ladies and gentlemen, he was the youngest to be appointed, and he also served as the Vice President of Association of Hospital and Healthcare Providers of India, Gujarat. He is currently National Honorary Advisor to Association of Hospital and Healthcare Providers in India, the largest association of hospitals in the country. He is one of the 6 members of Technical Committee in Quality Assurance India, which made the standard for healthcare quality for the whole country. He is a qualified assessor for World Health Organization WHO in patient safety and quality in healthcare. He is a consultant and teaching faculty at various universities and colleges across the country and has keen interest in teaching MBA students. He has represented India at various national and international level as a speaker in various conferences. He has won a number of awards and accolades for his contribution to the healthcare industry, which includes the best performing CEO by the government of Gujarat, Times Health Icon Gujarat, and many more. He is also a founder and general secretary of Association of Healthcare Providers, South Gujarat. He is a senior advisor for Hospi Health Company Private Limited, Mumbai, for hospital architecture, planning, design, and turnkey projects. And above them all, ladies and gentlemen, I'm proud to say that Dr. Kalia is a member of Bharat Vikas Parishad Surat, Maine. Today, he is going to deal with the subject defining the education system in university. With these words, I welcome Dr. Kalia and the Honorable Vice Chancellor of South Gujarat University, Dr. Chavda, and all of you at this virtual webinar. Thank you very much. जी धन्यवाद पच्चीकर सर. આપણે વચ્ચે જે માનનીય રૂપિનભાઈ પચ્ચીકર સાહેબે આજના આપણા વક્તાશ્રી અને આજના સેશનમાં ઉપસ્થિત વિશેષ મહેમાનોનો પરિચય આપ્યો. સૌનું હાર્દિક સ્વાગત પણ કર્યું. આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિ શ્રી કિશોરસિંહ ચાવડા સાહેબ બહુમુખી પ્રતિભા સંપન્ન છે અને ખૂબ સારી રીતે આખી વ્યવસ્થાપન એટલે એક એકેડેમિશિયન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી પણ વર્ક થાય અને એક એડમિન જે એક સંસ્થાનો કુશળ વહીવટ કઈ રીતે કરી શકાય એવું સુચારું સંચાલન અને ટેકનોલોજીના સહયોગથી જે થાય એ માટેનો એક વિશેષ પ્રતિભા સંપન્ન આપણી યુનિવર્સિટીના માન્ય કુલપતિશ્રી છે એવા કિશોરસિંહ ચાવડા સાહેબને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના આ વેબિનારના અધ્યક્ષીય ઉદ્બોધન આપે. ચાવડા સર. આભાર. આપણી યુનિવર્સિટી આપણું ગૌરવ. આપણી યુનિવર્સિટી વિનોબા દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ કુલસચિવ શ્રી આદરણીય ડોક્ટર જયદીપભાઈ ચૌધરીજી, આપણા જ આજના કીનોટ સ્પીકર ડોક્ટર શિવ નરેન કાલિયાજી, સુરત શહેરના
જાણીતા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ FRCના એક્સ મેમ્બર અને અનેક પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા એવા આદરણીય ડૉક્ટર રૂપિનભાઈ પચ્ચીગરજી, અમારી HRD વિભાગના વિભાગીય વડા અને સિનિયર HOD એવા ડૉક્ટર કિરણભાઈ પંડ્યાજી, NSS પ્રોગ્રામ ઓફિસર કોઓર્ડિનેટર ડૉક્ટર ભરતભાઈ ઠાકોરજી અને કો કોઓર્ડિનેટર શ્રી દર્શનભાઈ પુરોહિતજી અને સર્વ સોશિયલ મીડિયા પર હોય એવા તમામ દર્શક મિત્રોને યુનિવર્સિટી તરફથી પ્રણામ. વધારે કંઈ જ નહીં કહેતા, આપણે આ સર્વ મહેમાનોને અને ખાસ કરીને આદરણીય ડૉક્ટર કાલિયાજી જે છે, જેનું હોસ્પિટલ ક્ષેત્રે ખૂબ મોટું પ્રદાન છે, એમને જ સાંભળીએ. આદરણીય ડૉક્ટર કાલિયાજી. જી ધન્યવાદ સર. સરે આખી ભૂમિકાની વાત કરી અને આજના જે મુખ્ય સ્પીકર છે એ જે વાત કરનાર છે રીડિફાઇનિંગ ધ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇન યુનિવર્સિટી, વિશ્વવિદ્યાલયની જે શિક્ષા વ્યવસ્થા છે એને સંદર્ભે વિશેષ વાત કરનારી છે. આજે આપણો આ વેબિનાર છે યુનિવર્સિટીના અધિકૃત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટ્વિટર, ટેલિગ્રામ અને યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર પ્રસારિત થઈ રહ્યું છે. આપણી વચ્ચે જે સ્પીકર છે ડોક્ટર શિવ નારાયણ કાલિયા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ 3 સ્ટાર લાઈફ સાયન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ મુંબઈ 3 સ્ટાર ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ. સાહેબ આપને વિનંતી છે કે આપ આવો અને રીડિફાઇનિંગ ધ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇન યુનિવર્સિટી એ વિષય ઉપર વાત કરો. કાલિયા સર. Right. Good afternoon, everybody. Thank you so much for a very humble. I belong to a very humble background. I think the introduction had a little more than I deserve. So इस वेबिनार की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि लास्ट मंथ जी. Can I have the presentation also? Yes. So let me first thank my parents, teachers, family, friends, colleagues, everybody, because of who I believe in the process of lifelong learning. And without these people, I think I would not have been sitting here. And especially thanks to the students and faculty of South Gujarat University to give me the precious time of their life to listen to what I have to say. And Bharat Vikas Parishad for giving me this platform. And special thanks to the Honorable Vice Chancellor, especially the President of Bharat Vikas Parishad, Pachigar Sahib, Chaudhary Sahib, Pandya Sahib, Thakur Sahib, everybody who showed interest to listen to what we had to share. This lecture is going to be very different from what we routinely see in the university. The idea of coming here was different because हम यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं, जिस तरीके से हमें पढ़ाया जाता है, एक करिकुलम है, ये करिकुलम के बाहर की एक चीज है. तो जो आज हम बात करेंगे वो एक स्टोरी है इंडिया की, उसके एजुकेशन सिस्टम की, और किस तरीके से हम हिस्टोरिकल टाइम से आज तक हम पढ़ाते आए हैं और आगे क्या, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड हाउ डू यू रीडिफाइन द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, especially in universities. We are going to talk majorly on the higher education system. We are not going to take much about the primary and the secondary education. So if you go to the presentation and come back to the third slide. So I tell you what my experience with education is कि पिताजी कॉलेज में प्राध्यापक थे, माताजी टीचर थी, तीनों बहनें प्रोफेसर हैं. तो we were brought up in an atmosphere where education was everywhere in my life. My parents, my sisters, everybody was an educationist, and we had this relationship with education that most of the Indian families have. 90% हिंदुस्तान के घरों में ऐसा है कि पेरेंट्स पहले ये सोचते हैं कि बच्चे को पढ़ाना क्या है. तो पढ़ना हमारी सोसाइटी का एक सेंट्रल पॉइंट है जिसके आसपास पूरी लाइफ रिवॉल्व करती है. आप किसी के घर में जाइए, सबसे पहले पूछते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पढ़ाई कहाँ करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में करते हैं, क्या कोर्स कर रहे हैं. तो हमारे कल्चर से, हमारा पास्ट आप देखिए. इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, द फोटो ऑन माय लेफ्ट इज the famous Nalanda University, and the on my right is Takshashila, which was the oldest university in Asia and in the world. And Nalanda was the largest university where students from foreign countries used to come to India to study, right? And तो हमारे देश में ऐसी यूनिवर्सिटी हुई जहां से देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे. ऐसा हमारा कल्चर था कि लोग यहाँ सीखने आते थे. और चाणक्य, पाणिनि, यू नेम, आर्यभट्टा, हमारे ऐसे स्कॉलर्स रहे
जिनको समझने के लिए बाहर से लोग आते थे, बट उसके बीच में, और नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्लीज, इफ यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, इफ यू सी टुडे दिस इज द करंट सिनेरियो दैट जब हम न्यूज खोलते हैं और पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1 लाख बच्चे हैं, पियोन का पोस्ट निकला है, क्वालिफिकेशन 8वीं पास चाहिए, और 1 लाख बच्चे जिसमें से 4000 ऑलमोस्ट पीएचडी स्कॉलर हैं जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्या घट गया हमारे पास्ट में और आज हमारा प्रेजेंट ऐसा हो गया? तो दिस होल लेक्चर is about discovering that, about talking that. We are not here to criticize anybody, any previous governments or any previous people who have contributed. You know, you see the picture on your right, it says that 94% of engineering graduates who are not fit for IT, you know, for hiring by the IT firms. Now, these are the various newspapers thing that we see and we get very disheartened. हमारा बहुत दिल दुखता है कि एक यूनिवर्सिटी, एक देश जहां पे दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, तक्षशिला के बारे में और नालंदा के बारे में तो ये कहा जाता है कि वहां 90 लाख किताबें थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि जब उसे जलाया गया तो 6 महीने लगे उस आग को बुझने में। बस सो मच ऑफ रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद दिस कंट्री जो हमारे पास था, आज हमारी हालत ये है कि हमारे ग्रेजुएट्स के लिए दे आर नॉट इवन एलिजिबल टू गेट अ जॉब इन अ डिसेंट कंपनी। नाउ हाउ दिस चेंज हैपेंड, this journey is what we want to discuss and how we can change this in future. That's what I'm saying. So we will take a historical perspective. तो स्टोरी को हम कुछ लेक्चर वेबिनार, मैं इसको एक स्टोरी कहूंगा, स्टोरी को हम इस हिसाब से करेंगे कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम क्या थे, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल हमारे साथ क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ ऑफ एजुकेशन किस प्रकार से गया और आज हमारी क्या परिस्थिति है। तो वी हैव बीन कैरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, वी हैव बीन कैरिंग द मैकॉलेज बर्डन। Now the system which was meant only for rote learning, मतलब रट्टा लगाओ एग्जाम पास करो, आई थिंक इसके अलावा उस लर्निंग ने, क्योंकि वो लोग ये चाहते थे कि हम क्लर्क बनाए, they never wanted any research, they never wanted anybody to become the inventor of anything in India. They just wanted cheap labor for which they were manufacturing workers in India, and that is what continued almost 30 to 40 years after the independence as well. Now if you look at the picture that on the eve of independence, can we come to, yes, on the eve of independence, इंडिया की जो लिटरेशन थी that was 18.3%. हमारे देश में सिर्फ 18.3% लोग ऐसे थे जो पढ़ या लिख सकते थे, जिसमें से ज्यादातर मेल्स थे 27% और महिलाएं केवल 8% ही लिख पढ़ सकती थी। उस टाइम यूनिवर्सिटीज थी टोटल 20, जहां 29-30 स्टेट्स की बात हो रही है, वहां पे 20 यूनिवर्सिटी थी, सिर्फ 500 कॉलेज थे और 2.1 लाख स्टूडेंट ही एलिजिबल थे हायर एजुकेशन में जो पढ़ रहे थे जी। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि एक ऐसी सोसाइटी, एक नॉलेज सोसाइटी, जहां पे बचपन से बच्चों को सबसे ज्यादा प्रेशराइज पढ़ाने के लिए किया जाता है, उस देश का यह हाल था कि हमारे पास सिर्फ 20 यूनिवर्सिटी थी पूरे देश में और सिर्फ 2.1 लाख बच्चे पढ़ते थे, पॉपुलेशन तब भी 30-35 करोड़ थी देश की। तो जो पहली गवर्नमेंट थी उनका फोकस कभी क्वालिटी पे शायद रहा नहीं, क्योंकि उनको ये देखना था कि सोसाइटी में हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देयर वाज कास्टिज्म सिस्टम, जिसमें से एससी-बीसीज के पास स्कूल्स, हायर एजुकेशन, किसी की फैसिलिटी नहीं थी, फीमेल एजुकेशन नहीं था, तो उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ऐसा कि स्कूल खोलो, मैक्सिमम कॉलेजेस खोलो, जगह जगह पे खोलो। तो क्वालिटी गॉट इग्नोर्ड इन द फर्स्ट 20 to 30 इयर्स ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, राइट। फिर उसके बाद आप 1960s की मूवीज देखिए, 1970s की मूवी देखिए, जिसमें वो एक दिखाते हैं कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर एक मूवी बनती थी कि वो पास तो हो गया है, ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उसके लिए नौकरी नहीं है। तो ये सारी कहानी वहां से शुरू होती है। वो सब इसी का एक आउटकम था कि ना तो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन था। आप ज्योग्राफिकली देखिए कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज या तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती थी, बच्चे गांव से आते थे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे, या बॉम्बे, बंगाल, उस टाइम पे शायद अहमदाबाद, गांधीनगर, गांधीनगर तो था नहीं, अहमदाबाद और बड़ौदा, आई थिंक दीज आर द वेरी फ्यू गुड यूनिवर्सिटीज दैट वर प्रेजेंट राइट नाउ। द सेकंड थिंग दैट हैपेंड वाज कि इकोनॉमी कभी कॉलेजेस की तरह एक्सपैंड ही नहीं की। लिबरलाइजेशन हुआ 92 में, प्राइवेट सेक्टर हिंदुस्तान में आया 92 में, नौकरियां खुली 92 के बाद। तो जो बच्चे 1950 से लेके 1970s, 80s, 90s तक पढ़े, उनके लिए इकोनॉमी उतना एक्सपैंड ही नहीं कर पाई कि जितने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स आप क्रिएट कर रहे थे उनको कई नौकरियां मिली। ये सब वो बच्चे हैं जो बाहर गए, IITs में जो पढ़े, जो बाहर गए, उन्होंने बहुत नाम कमाया दूसरे देशों में जाके, अब वो सीनियर फैकल्टीज हैं, वो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, MIT, हर जगह आप देखेंगे हिंदुस्तानी स्टूडेंट हैं, 60s में से पास होकर निकले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिकॉज अपना सेक्टर, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको कभी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाया, बिकॉज इकोनॉमी उस तरीके से ग्रो ही नहीं कर पाई। सो वी कैन नॉट ब्लेम ओनली द एजुकेशन सिस्टम, द इकोनॉमी एंड द एजुकेशन सिस्टम गो हैंड इन हैंड। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इट हैपेंड। द रीजन हम ये डिस्कस कर रहे हैं इज बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ, आज की डेट में अगर प्रॉब्लम समझनी है
तो पास समझना बहुत जरूरी है ताकि वो गलतियां हम दोबारा से एटलीस्ट नहीं करें. So this is what a small effort I made to tell you that what has happened. Now the problem is that when we are talking about Nalanda, when we are talking about Takshashila, at that time कोर्सेज बनते थे तो किस लिए बनते थे कि अगर एक एरिया में है, जैसे आज हम सूरत में बैठे हैं, सूरत को कोस्ट लगता है, तो फिशिंग इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी हियर. देयर मतलब वी हैव सो मच ऑफ इंडस्ट्री हियर. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द यूनिवर्सिटी? आप कैसे ग्रेजुएट आज क्रिएट करना चाहते हो जो कल उस इंडस्ट्री 40 सेंटीमीटर એટલે પેલો શોર્ટ પર નંબર आप कैसे ग्रेजुएट्स क्रिएट करना चाहते हो जो इंडस्ट्री में कल एब्जॉर्ब हो जाएं? This was a missing link in our previous education, all education policies. मतलब आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि the first कोठारी कमीशन which came in 1966 to 1968, उसकी जो रिकमेंडेशन थी कि जीडीपी का 6% आपको एजुकेशन पे या हायर एजुकेशन पे खर्चा करना है, वो टिल 1919 हम लोग एजुकेशन पे खर्च नहीं कर पाए. Till 1919 the percentage of GDP expenditure of the country was close to 3.1%. The split of 6% which was that time given by Kothari Commission was 2%, 2% and 2%. Next. So one is that we completely ignored education as one of the priorities of government. Now बड़ा ही सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं कि सरकार इस चीज को इतना इग्नोर कर रही है. Why did the government ignore education as one of the priority? जब हर हिंदुस्तानी घर में सबसे पहली चीज जो बात की जाती है वो एजुकेशन. तो ये चीज समझने की ये है कि सरकारें वो एक्शन करती हैं जिसके बेस पे वो इलेक्शन जीत सकती हैं. जिस दिन हमारी जनता की ये प्रायोरिटी हो जाएगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हो, हर कॉलेज एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, आप उसी हिसाब से आपका वोटिंग पैटर्न कर दीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ अ डेकेड यू विल सी अ रेवोल्यूशन इन education. But the problem is that when we come to vote or when we come to choose our governments or ministers or MLAs or sarpanch or any, we do not focus on education. Our priorities become different. So that is why none of the government has till date allocated this much of the budget. I'm very hopeful that with the new education policy which has just come, I have gone through the draft of the new education policy which we will discuss at the end of this webinar in the last 10 minutes. It is a revolution in the field of education, but उसमें बहुत सारी बात की गई है. एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर मेरे सामने ये आया कि एजुकेशन पॉलिसी एक देश का फ्यूचर है. आई थिंक यूनिवर्सिटी डिसाइड, ना डॉक्टर्स है, ना इंजीनियर्स है, ना कोई है. यूनिवर्सिटी इज दी एल्मा मैटर, वही डिसाइड करती है कि देश का फ्यूचर कहाँ जाएगा. ये जान के बहुत दुख हुआ कि साल में एजुकेशन मतलब पूरे 75 साल के पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1966-68 में, रिवाइज हुई 86 में, उसका रिवीजन तीसरी बार आया 92 में, और उसके बाद 28 साल बाद आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं. इससे समझ में आता है कि किसी भी सरकार को इतना एंथुसियाज्म नहीं था टू रिवाइज द एजुकेशन करिकुलम इन आवर कंट्री. एंड द रीजन फॉर इग्नोरेंस आई लीव टू द बेटर जजमेंट ऑफ द ऑडियंस दैट व्हाई डिड दे डू दैट. कि 28 साल बाद एक विजन का पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है, और आप ये समझ लीजिए, मतलब सबसे दुख की बात इसमें ये लगती है कि 92 में लिबरलाइजेशन हो गया. 92 में लास्ट टाइम आपकी एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हुई. एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज होने के बाद लिबरलाइजेशन आया, इंटरनेट आया, कंप्यूटर आए, पूरा फेसबुक आया, इंस्टाग्राम आया, ये सब टेक्नोलॉजीज जिसकी वजह से आप ये वेबिनार सुन पा रहे हैं. इतना कुछ चेंज हो गया, और आज भी जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, वी आर फॉलोइंग द 92 एजुकेशन पॉलिसी व्हिच वाज 86 वाज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वन ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड 92 इट वाज जस्ट रिवाइज्ड. So उसके 28 साल बाद finally a government has looked into it. The policy is very good, but as Dr. Pandya said that it is not about the policy, it is about the implementation. So we have to look. Now till the time that policy comes, आज के challenges university education में क्या है, हम उस पर discuss कर लेते हैं. तो सबसे पहली बात मुझे जो इस पे कहनी है, जिससे हमें बहुत दुखता है, because हम डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, these people earn a lot. ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज टीचर को उसका ड्यू सम्मान नहीं मिलता सोसाइटी में, तब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव नहीं हो सकता. आज की डेट में मैं कभी यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर लेता हूँ या कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं. पर क्यों बनना चाहते हैं? Why do they want to become? Why do they emulate these professions? Because it gives them recognition, it gives them financial support, it gives them some recognition in the society, and they can contribute in a major way. अगर देखा जाए कंट्रीब्यूशन के तरीके से, तो जिस तरीके से एक टीचर कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी को, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रोफेशन
ऐसा है जो कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। सो मतलब गुरु, भगवान के बाद गुरु का स्थान है, भगवान, माता पिता और उसके बाद गुरु। लेकिन जब उस गुरु की आप समाज में परिस्थिति देखते हैं कि फाइनेंशियली अगर उसकी बात करें, सोशल रेपुटेशन की बात करें, सोशल रेपुटेशन शायद गुरुओं का हमेशा से हाई था, हाई रहेगा, रहना चाहिए, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल देखते हैं तो बहुत ही दुख की बात है कि आज तक, मैं एक डेटा देख रहा था, मैंने कल जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा MHRD का कुछ डेटा देख लेता हूँ। तो जो मैंने आपको बताई टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज 20 थी, अगर आज आप उसका टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज का डेटा देखेंगे तो आज की डेट में हमारे पास 1067 और 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 416 स्टेट यूनिवर्सिटी, 486 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 159 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सो वी हैव सो मेनी universities and colleges today from independence to today. So it's not that education sector has not, it has not developed, but it has not developed, it has obviously got a lot of lacuna. अभी आज की डेट में हमारे पास 52,627 डिग्री कॉलेज हैं, 52,627 डिग्री कॉलेज हैं, पर जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि क्वालिटी इज सफरिंग अ लॉट। दीज आर नॉट द स्टूडेंट दैट यू आर क्रिएटिंग जिसको मार्केट में जॉब मिल जाएगा या कुछ इन्वेंट करेगा या कोई रिसर्च पेपर लिखेगा। So why has that happened? The whole presentation is now about that. तो अभी challenges की बात करें यूनिवर्सिटी में, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है जो मैंने टीचर्स के बारे में पहले कही, उस पर हम दोबारा आएंगे कि why a teacher has to be given a due respect in the society and why does he has to be financially supported for his research, for his ecosystem, so that he does not have to look outside to the private sector to get better paid, right? So I think the education system is heavily over-regulated and heavily under-governed. अब ये कैसा है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, आप रिसर्च ओरिएंटेड आदमी हैं, आपको अपना स्टाफ चुनना है, आपको उसकी आजादी नहीं है, आपको अपना करिकुलम डिसाइड करना है, आपको उसकी आजादी नहीं है, आप किस तरीके के बच्चे चाहते हैं अपने बैच में, आपको उसकी आजादी नहीं है। अगर आपको ये सब फ्रीडम यहाँ नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली आप किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाएंगे जहां आपका पूरा इनपुट लिया जाता है, रादर देन बीइंग इन अ प्लेस जहां पे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन और इनोवेशन को उसी, कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की हो एक डिपार्टमेंट को बिल्डअप करने को, इफ ही डज नॉट हैव अ से इन हिज डिपार्टमेंट, ही विल नेवर बी मोटिवेटेड टू इंप्रूव द डिपार्टमेंट फर्दर एंड वर्क विद 100% zeal. The second thing I would like to tell you at the same time, we talked about the universities, central universities. If you look at the private sector, एक आयरनी देखिए आप प्राइवेट सेक्टर की, ये कमाल की बात ये है कि हिंदुस्तान में अगर आपका बच्चा प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन दे रहा है, आप उसको कभी सरकारी स्कूल में नहीं डालेंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन बहुत अच्छी है, और अगर आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहा है तो वो उसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं डालेंगे। क्योंकि अगर आप देखें जितने भी इंस्टीट्यूट है इंडिया में, चाहे वो IITs हैं, IIMs हैं या कोई भी यूनिवर्सिटीज हैं, एम्स है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ये सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। सो दिस इज अ डाइकोटमी इन अवर स्ट्रक्चर, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हायर एजुकेशन इज नॉट फाइनेंशियली वायबल, दैट इज व्हाई। बट आज की डेट में आप पिछले 5-10 साल का डेटा देखिए, 60% बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और मॉनिटर करने के लिए व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डूइंग, I again over-regulated and under-governed, because the quality of student that they are producing, still not there is a single, I cannot name more than 5 to 6 national private universities which have produced some excellent result rather than the state. So 90% जो excellence आपका result निकल रहा है वो state university से निकल रहा है, और state universities को fund करने के लिए governments के पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर रही है। So what is the way out? Now these are the challenges. Obviously we are not the richest country, we cannot blame every government because we are selecting the government. Ultimately the person who has to be blamed is us. We are only looking at what are the challenges. So I'm going to one by one go through various challenges. So we have told that we are not getting enough percentage of the GDP, especially in the higher education, right? We are the signatory to UNESCO, right? UNESCO का sustainable development goals to 2030, if we see, out of that 17 goals, the fourth goal talks about the quality in higher education. Now that's where you see NAC accreditation, right? There has to be one more A in the NAC there. So NAC accreditation, if we talk about, now this is a very good initiative of the government. So at least there is some kind of a movement in the universities to see. So the university that today we are sitting is an A graded university, right? Accredited with NAC. But the problem comes when I get a call from a lot of teachers sometime, because I told you I'm from a family of teachers. So I get a call from a lot of professors saying कि मुझे किसी का SOP देखना है because मेरे को रिपोर्ट सबमिट करनी है NAC में। अभी NAC की रिपोर्ट बनानी है तो रातों रात पेपर बनेंगे
और वो सबमिट होंगे और आपको उसके बेस पे ग्रेडेशन मिल जाएगा, तो आप उसको कभी भी उस लेवल ऑफ क्वालिटी पे आप जा ही नहीं सकते. These NAAC was developed so that universities can function in consonance with these quality standards. But हो क्या गया उल्टा, क्योंकि हमें A gradation चाहिए, तो अभी हम documents बना रहे हैं to meet those standards. So everything government will make initiative, but it is in our hands. How do we fulfill these initiatives, right? So we've already talked about lack of funding, especially state and central universities. I told about you about the Kothari Commission. We will also talk about the latest commission which has given this new guidelines, right? The third and the last, I think there is a lot of political interference as far as in every university. I believe you have to call spade a spade. Agar universities में इतना ज़्यादा political interference है, right from recruitment to getting students, then the autonomy of that institute cannot be maintained. Because I think you have to trust the people that you appoint. The job of the government may be to appoint the right man to the right job, but after he is appointed, I think it should be left to the wisdom of the vice chancellor and the HODs and the faculty members to draw various standards and promote whomever they think are doing the best, right? Plus, also when we talk about research, there is a complete lack of ecosystem as far as. So I was listening to this very brilliant lecture by the vice chancellor of Delhi University, Dr. Singh. And he was saying that Flipkart, so the IIT Delhi vice chancellor, he said Flipkart, so Sachin and Binny Bansal were a pass out of IIT Delhi. So if IIT Delhi would have invested in their students, they would have got so much, maybe have 10% stake in that startup. By the time the Flipkart sold to Walmart, they would have had so much of money that they would have never required funds for at least 5 years. But because they never trusted their own students, and the investors from outside came and they invested money, so a lot of companies made money out of such startups rather than the alma mater, the IIT Delhi and their own institute. So look at us. We are creating geniuses in our universities, and people outside our universities are making money out of them. The third thing, I think, if you can go to the next slide. Go to the last slide. Previous slide. So yes, we go to the challenges. So I also believe very strongly that a university in which there is no appropriate feedback mechanism. आप बच्चे का हर 6 महीने में एग्जाम ले लीजिए, आप बच्चे का 1 साल में एग्जाम ले लीजिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फैकल्टी का एक फीडबैक है, इट इज अ वेरी स्कैरी थिंग. मैं बहुत सारे एकेडमिशियन, मेरे फादर टीचर थे, प्रिंसिपल थे, तो हमसे बहुत बार डिस्कस किया करते थे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, उसका फीडबैक आप अपने बच्चों से लीजिए, उसका फीडबैक जिनको आप पढ़ा रहे हो स्टूडेंट्स, आप उनसे लीजिए. So there would be a lot of resistance among the teachers, but I think the time has come. Even in NAAC, there is a requirement which I know how is being fulfilled. Students are scared to give a feedback about their teachers. So I think this culture of fear in the university, in the Indian universities. I had this opportunity that after passing out from Kurukshetra University, Haryana, I was preparing for UPSC, so I had to stay in Punjab University. So I utilized their library, and then I moved to Delhi University. So अमेजिंग बात इन दोनों यूनिवर्सिटीज ने जितने बहुत सारे लोग प्रोड्यूस किए, बहुत सारे एलुमनाई प्रोड्यूस किए, उनकी ये थी कि वहाँ क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है, वहाँ चैलेंजेस को, वह एक बहुत ओपन सोसाइटी है जहाँ लोग बात करते हैं, where anybody who is criticizing you in a constructive manner is not taking otherwise. So I think if a university has to progress, there has to be a lot of discussion among the stakeholders, which are majorly the teachers, the head of departments, the management, and the students who are at the heart of it. I honestly feel that there is a lot of lack of freedom of speech in Indian universities and expression. We regularly criticize JNU, Delhi University, major campuses where we see कि बच्चे strike कर रहे हैं. आज बच्चों ने इस चीज के लिए कुछ हंगामा कर दिया, आज उस चीज के लिए कुछ हंगामा कर दिया. The moment मैं किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को देखता हूँ, मुझे तो लगता है कि ये तो this is a part of their personality development. कि जो बच्चा कैंटीन में अच्छा खाने के लिए अगर जाके 4 लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो कल वो देश में कुछ उल्टा हो जाएगा, तो वहां से लीडर्स कहां से निकलेंगे? टीचर्स का यहाँ पे रोल ऐसा आ जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चे को वो कैंटीन में अच्छा खाना ना मिलने की वजह से प्रोटेस्ट से रोकेंगे, तो कल वो बच्चा देश में कुछ उल्टा होगा तो कभी किसी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेगा. तो आपको उसको वहां रोकना नहीं है. वो जैसा बच्चा बचपन में जो दीवारें पेंट करता है और दीवारें पेंट करते हुए आप उसे एक बार रोक देते हो तो वो कभी पेंटर नहीं बन पाता. सिमिलरली आप एक बच्चे को प्रोटेस्ट से रोकोगे कि उसकी, या तो आप इंटरनल असेसमेंट खराब करोगे, आपको लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज कर रहा है या ये मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है. अगर आप उसकी क्रिएटिविटी को उस दिन रोक दोगे,
तो बच्चा कभी लीडर नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको लीडर प्रोड्यूस करने हैं तो आपको क्रिटिसिज्म को और डिफरेंट ओपिनियंस को एक स्पेस देना पड़ेगा, एक क्रिएटिव स्पेस देना पड़ेगा। हाँ, उसको देयर हैज टू बी अ डॉकरम, देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन ऑफ द यूनिवर्सिटी, कंप्लीटली एग्री, बट यू cannot muzzle all the voices. I think that is one of the major challenges that we are facing in our education system, that we are not open to criticism. We are very sensitive about criticism, and criticism is a thesis, antithesis, and then synthesis. So there is no antithesis happening. The next slide, please. So if you see these students protesting, all these, professors resigning because they feel that there is no autonomy. Next slide, please. In university. So I've got this slide. This next slide is very, very nice. We keep, so there is no Indian university among the top 200 according to Times World University Ranking. Now, this is the most prestigious university rankings in the world. I personally do not believe that rankings are a good thing because there are a lot of financial things here. They are biased towards the Western universities, all said and done. But मुझे फिर भी लगता है कि कम से कम एक तो ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो इवन वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स में कंसिस्टेंटली टॉप पे रहे, चाहे हमारी IITs, IIMs, दे आर ऑल प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। आप राइट हैंड साइड की स्लाइड देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हम आए दिन मीडिया में देखते हैं, जिसको हम आए दिन, look at what they have produced. They have produced Nobel laureates, they have produced ministers, they have produced civil servants, they have produced people of eminent presence in your country. जिस यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंट कल्चर होता है, वहां के एलुमनाई का फोटो ऐसा होता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अगर आप वहां राइट ऑफ फ्रीडम स्पीच, freedom of expression doge, then this is how your alumni will look like. These are the people who are going to take you to the next level, or your university to the next level. So I honestly believe, come to the next slide. So jo main aapse baat kar raha tha ki Delhi University, so there is a case that we should discuss here. Pachikar sahab and Pandya sahab, you will be very interested to know that Ramanujan, the famous mathematician, he was a pass out of Madras University. So ye kissa sunaya Singh sahab ne, who was a vice chancellor of university. I attended this conference in दिल्ली। वैसे मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं पड़ता, बट बिकॉज मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ एजुकेशन में, फैमिली वैल्यूज की तरह, तो मैं गया, मैं सुन रहा था लेक्चर। तो उन्होंने बोला कि रामानुजम फेल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ BA इन इंग्लिश, ही कुड नॉट पास। और इन्होंने बार बार रिप्रेजेंटेशन किया, लेकिन मद्रास की यूनिवर्सिटी ने इनको डिग्री नहीं दी और दे भी नहीं पाई। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर हार्डी को एक चिट्ठी लिखी और अपनी सारी मैथ्स की थ्योरम उनको भेजी और उनको बोला कि देखो ये मेरा काम है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इंडिया की डिग्री में यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। प्रोफेसर हार्डी ने इंडिया के सब लीडिंग एकेडमिशियंस को लिखा कि ये जो आदमी है, ये जीनियस है, जो जिसने लिखा है, ये ऑक्सफोर्ड में भी हम नहीं कर पा रहे, तो इसको एक्नॉलेज कीजिए। मद्रास यूनिवर्सिटी ने इसको नहीं। उसके बाद भी मद्रास यूनिवर्सिटी डिड नॉट गिव हिम अ PhD, एंड एज द वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेड कि अगर आज भी ये आदमी, द फेमस मैन, इफ ही कम्स बैक टुडे, ना तो आज मैं इसे फैकल्टी में अपॉइंट कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो इसके पास नेट है, ना ये JRF है, ना ही इसने ग्रेजुएशन किया है, ना ही ये पोस्ट ग्रेजुएट है। द मैन हु चेंज्ड द वे द मैथमेटिक्स वर्क इन इंडिया, ही डिड नॉट गेट अ BA डिग्री, और इस आदमी को ऑक्सफोर्ड ने PhD, ऑनररी PhD दिया। So that's what, that there is a problem in this education system that we have to understand. I'll tell you my experience. I am a BDS. I'm a bachelor in dental surgery. Now, when I applied for a PhD in one of the very renowned universities in Delhi, they rejected my application saying that BDS is a graduation program and it cannot directly apply for PhD because you need a post-graduation. So I wrote back to the UGC saying that my degree is for 5.5 years. The graduation is for 3 years. If I would have done a BA, I would have finished my MA in 5 years, but I have actually studied 5.5 years. And this is I send them my, what do you call it? It's a thesis. No, it's not a thesis. What is it, sir? Before thesis, which you give? The proposal. I send them that I want to work on gender studies. They rejected my application. So the idea, I did not want to educate because I wanted to earn money. I was earning enough money in my profession, right? मैं तो अपने profession में पैसा कमा रहा हूँ, but they basically want to kill your pure research when you want to do it. So that is what we have been doing in India, and that is because that slide that you see, आपके 4000 PN, एक 4000 PhD बच्चे एक PN की पोस्ट के लिए अप्लाई इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन को एजुकेशन की तरह नहीं लिया। हर कोई एजुकेशन इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि उसको उसमें नौकरी करनी है, वो प्योर रिसर्च कर ही नहीं रहा, और प्योर रिसर्च को कोई प्रमोट भी नहीं कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी उसको हैंड होल्ड भी नहीं कर रही है। सिर्फ एक लीगल है, एक थीसिस है, एक आपका एक
आप स्ट्रक्चर बना के दे दिए और आप उसको पुश करे जा रहे हो बच्चों को कि आपको जब तक आप ये 4 स्टैंडर्ड में नहीं फिट बैठते हैं। तो रामानुजम साहब तो आज की डेट में वाइस चांसलर भी नहीं बन सकते क्योंकि इनके पास तो 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और ये तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी नहीं है और पीएचडी भी नहीं किए। आप देखिए मतलब, सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। सो वी हैव टू डू एन ओवरऑल ऑफ थिंकिंग व्हेन वी आर मेकिंग एन एजुकेशन पॉलिसी, दैट व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च आर वी promoting, what kind of next generation are we making. According to me, these are few problems in the Indian system because of which we have reduced ourselves to producing clerks and employees for major corporates rather than doing anything in research. So next slide please. So this is one of because one of my favorite areas of interest is mental health, and we're doing a lot of work with one of my partners in Delhi. So you see the suicide ratio in India. Every hour a student is committing suicide. The reason this kid is committing suicide is because there is a lot of expectation. Not every child can go through this pressure once they come to university. There is so much of pressure because I think there is something that we need to do about this whole learning system where students are able to express and we are able to take opinions from both sides and open up the learning system a bit. So मेरे हिसाब से now finally कि अब कुछ करना तो है, प्रॉब्लम्स तो है, यूनिवर्सिटी में है, चैलेंजेस हैं, और ऐसा भी नहीं कि ये चैलेंजेस मेरे कहने से या कुछ ऐसा किया जा सके उससे एकदम से दूर हो जाए. वी हैव टू हैव अ लार्जर विजन. जो मैंने आपको पहले एक लेक्चर में एक चीज बताई, अगर आप टीचर्स की बात करेंगे, टीचर्स के लिए मेरे बहुत स्पेसिफिक मैसेज. आई थिंक इफ एनी टीचर इज लिसनिंग टू दिस दे मस्ट लिसन टू दिस. द नेक्स्ट स्लाइड, देन दिस नेक्स्ट स्लाइड. Okay, what is faculty challenge? Now I saw this data. It's very surprising कि 45% पोजीशन वेकेंट है यूनिवर्सिटीज में और उसमें से 30 से 35% आईआईटी और आईएम्स में और एनआईटीज में वेकेंट हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट्स हैं. अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट टीचर रेशो की बात कर रहे हैं, हम जीनियस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब कंस्ट्रेंट के बाद अगर हम दुनिया को बेस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट दे सकते हैं, तो आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू चेंज द वे द वर्ल्ड. वी कैन बी द वर्ल्ड लीडर, बट देयर वी हैव टू चेंज. ना ये 45% पोजीशन इसलिए वेकेंट है क्योंकि आपका जीडीपी का 6% आप हायर एजुकेशन में या 2% आउट ऑफ द 6% जो हायर एजुकेशन में आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. वो 30-35% कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म में वो पोस्ट फंसी है. उसके बाद मैं ज्यादातर यूनिवर्सिटी टीचर से बात करता हूँ तो वो एडहॉक पे है. मतलब एडहॉक क्या हुआ, मतलब क्या है, मतलब एक अध्यापक जिसके हाथ में आपने देश का भविष्य दे दिया, जिसने आपको ये बोला कि मैंने अपने बच्चे को उसके पास भेज दिया कि ये उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं है. उसको यूनिवर्सिटी में जो पैसा मिल रहा है वो उसके जितना वो डिजर्व करता है उससे कम मिल रहा है. तो कौन सा ऐसा टीचर है जो इंडिया में रहना चाहेगा और रिसर्च करना चाहेगा या आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएगा? आई थिंक वी हैव टू, इट्स अ टाइम हैज कम. टीचर हैज टू बी द हाईएस्ट पेड जॉब इन दिस कंट्री. आई थिंक अगेन एंड अगेन पीपल से, आई थिंक दिस इज वन थिंग. तो इसका मैंने एक दूसरा भी एक वो निकाला कि कितने सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट हैं जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए. डेटा इज एस्टोनिशिंग कि अगर पूरी दुनिया में 10 बच्चे दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, उसमें से 2 बच्चे हिंदुस्तानी हैं, दिस इज मैक्सिमम, और अगले 3 चाइनीज हैं. तो ये 20% ऑफ, सो 7 lakhs इंडियन स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड every year to pursue their higher education. Most of the faculties who are now teaching in higher education institutes as the head of departments are Indians. Are not even Indians who have done their post graduation. They are Indians who have done their graduation and post graduation here, but they are not staying back here. So if you want to change the whole pyramid of all these changes, I think आपको कहीं ना कहीं start teacher से करना पड़ेगा. आप contract पे teachers नहीं रख सकते. आप teacher is not a contractual job. It is a commitment. आप एक मंदिर में मतलब क्या बोलिए, मतलब अगर ये शिक्षा एक मंदिर, आप यूनिवर्सिटी इज अ टेम्पल, अगर वहां पे भी आप उसको इतनी इनसिक्योरिटी दोगे एक टीचर को कि उसकी ना तो जॉब, उसकी सेटिस्फैक्शन है, ना उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, तो मुझे नहीं लगता वो कैसे पढ़ाएगा. आप आर्मी में जाइए, कैंटोनमेंट एरिया में जाइए, आपको लगेगा एक आर्मी, मेरे को आर्मी में से एक चीज जो एजुकेशन सेक्टर या यूनिवर्सिटी को लेनी चाहिए, वो मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि ये आई डोंट नो व्हाई दे डोंट डू इट. आई यूज्ड टू आर्ग्यू विद माय फादर. मैं अपने फादर के साथ बहस करता था कि आप फौज में जाइए, आप कैंटोनमेंट एरिया में चले जाइए, वहां का एक ब्रिगेडियर होता है, आपके यहाँ वाइस चांसलर होता है, आपका फौज का कोई फौजी होगा, द मोमेंट ही विल कम, ही विल बी रिस्पेक्टेड बाय हिज स्टाफ मेंबर्स, बाय हिज students, so by his company, by everybody. He will have a club inside his university or his command or his cantonment area. किसी आर्मी ऑफिसर को वहां सब्सिडाइज पे उसको राशन भी मिल जाएगा, सारी फैसिलिटी उसको अपनी कैंटोनमेंट में मिलेगी. बाहर की दुनिया के लिए वो
किसी भी चीज के लिए he is not dependent. उसको मूवी देखनी है, उसके बच्चे को हायर एजुकेशन पढ़नी है, university should be able to take care of for all of its staff, right from the man standing on the door to the man teaching in the class to the man sitting on the highest chair. उनके बच्चों की, उनके घर की, उनके रहने की सुविधा, I think that should be taken care by the university themselves. Then only when you will go into a class and ask how many of you want to become a teacher, then everybody would say I want to become a teacher. So that has a job security. Then they will be able to put their mind into a thorough research. If you take, अगर आप एक आदमी को उसके बेसिक्स के लिए इतना ट्रबल करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जो अध्यापक की हालत है, अगर वो हालत कंटिन्यू रही तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आप एजुकेशन पॉलिसी लाइए उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला है. So I think this is something that, you know, and what teachers have to understand, I think this is the, अगर आप पूरी प्रेजेंटेशन का एक कोर मैसेज, if I can give it, I'm not honestly qualified enough to do that, but मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में आदमी अपने आप को पहचानने के लिए आता है कि मैं कौन हूँ. मुझे नहीं लगता, ये सारी किताबें, सारी लाइब्रेरी, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है. अभी सर बात कर रहे थे कि माइकल सैंडल्स प्रोफेसर है, तो अभी 10 मिनट पहले बिफोर द लेक्चर ही वाज टेलिंग मी, आई हैव रेड दैट प्रोफेसर, आई हैव रेड हिज बुक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द बुक्स. उसके लिए बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं आते. आई थिंक ये समझाने के लिए काफी टाइम लग गया, मुझे भी समझने में टाइम लग गया, शायद हमारे प्रीडेसेसर्स को भी समझाने के लिए कि बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आते. बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ बाकी बहुत कुछ करने आते हैं. जिंदगी कैसे जीनी है, टीम में कैसे काम करना है, राजनीति कैसे समझनी है, देश को कैसे समझना है, चल क्या रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने आते हैं. और वो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज देयर पैशन, वो जिंदगी भर क्या कर सकते हैं, वो ये फाइंड आउट करने के लिए आते हैं. लेकिन अगर आप उनकी आवाज नहीं सुनोगे, लेकिन अगर आप वो क्या करना चाहते हैं, आई थिंक टीचर का यही जॉब है कि बच्चे को देखे, आइडेंटिफाई करे कि ये पेंटर है, ये म्यूजिशियन है, ये गलती से फिजिक्स में आ गया है, वो उसको उतना ब्रॉडर एक प्लेटफॉर्म दे ताकि वो अपनी चीजों को परस्यू कर पाए और एक्सीलेंस की तरफ बढ़ पाए. Right, so I think that is the one role of university that I think is the major change in the way we teach. Right, I've already discussed with you about you know how many students. By the way, उसमें रैंकिंग में अगर आप एक और बात नोटिस करेंगे कि हिंदुस्तान पढ़ने के लिए कितने लोग आते हैं, तो नालंदा में जैसे हमने बोला है कि लाखों लोग वहां पढ़ने के लिए आते थे, आज की डेट में सिर्फ 48,000, मतलब हमारे यहाँ से 7 लाख बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, और हिंदुस्तान में सिर्फ 48,000 पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जिसमें से मेजर पीपल आर कमिंग फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज. मेजर स्टूडेंट्स, अगर आप एक यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, only 48,000 students are coming to you. That means we have to look at the way we are teaching, we have to look at the way we are conducting our research and all this. Then मैंने उस पर भी काफी थोड़ा पढ़ा कि किस तरीके से रिसर्च पे ये लोग इंटरनेशनली रैंकिंग्स देते हैं, तो काफी लगा, मुझे ऐसा लगता है कि just with a little change in our thinking, you know, why this lecture and why today? So why this lecture and why today? सबसे चिंता की बात क्या है? चिंता की बात ये है, चिंता की बात मुझे यहाँ लगती है, नेक्स्ट स्लाइड. So हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की. Our honorable prime minister keeps talking about it and it's a very valid point. आज की डेट में 65% of the Indian population is less than 35 years of age and 50% of them are less than 25 years of age. ये 50% population of Hindustan is less than 25 साल से कम है. ये बच्चे अब हायर एजुकेशन में आप लोगों के पास आने वाले. आप समय उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है. हमें अगर कुछ बदलना है तो वो आज ही बदलना है. We do not have time because these are the students who are going to shape the future of this country for another 50 years. So this is what I think is a very worrying factor. So whatever needs to be done, government has done its bit. मैं अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आने वाला हूँ. मैंने उसका ड्राफ्ट पढ़ा है, अपनी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया, तो मैं उसमें से जो अच्छी चीजें हैं वो मैं आपको थोड़ा बता पाऊंगा. तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हर यूनिवर्सिटी को फंड रेज करने के लिए आई थिंक दे शुड जस्ट पिक अप प्रोजेक्ट्स. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटीज व्हिच आर लोकेटेड नेक्स्ट टू you know industrial centers just like Surat. Second thing, I think the students must be, so there are so many McDonald's here. McDonald's की chain है, restaurants हैं, आपके स्टूडेंट हैं अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आ रहे हैं, they should be able to get some, there should be some arrangement between these chains and the university so that they can understand how to work on the field. They can go to industries like Reliance, Adani. We have so much of industrial outbuilt here that they can go spend 3 hours, 4 hours there, do on-field training and then come back and read their books so that they understand what is the disconnect, what is the requirement of the industry, what will they be required to do after reading their books, rather than just कि आप पढ़ लो और
4 दिन पहले एग्जाम से पहले किताब खोलो और पास कर लो एग्जाम, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर काम आने वाला है। सेकंड थिंग इज आप जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जाइए, आपको दुनिया के सबसे अच्छे लोग वहां पे आके काम करते मिलेंगे। जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं उसका मोटो मैं पढ़ रहा था, सत्यम ज्ञानम अनंतम। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोटो। एंड ऑन द नेम, जिसका नाम ही वीर नर्मदो, अगर वहां पे लिटरेचर की बात नहीं हो रही है और वहां पे ऐसे कोई फेस्टिवल नहीं हो रहे हैं कोई ऐसा जिसमें कोई वर्ल्ड रिनाउंड, मतलब मेरे को यहाँ पे लाने वाले पच्चीकर साहब है जो खुद थिएटर आर्टिस्ट है, तो अगर यहाँ बहुत बड़ा ड्रामा नहीं हो रहा है या कोई थिएटर नहीं हो रहा है जिसमें एक फ्रीडम है, यहाँ पे कोई कल्चर फेस्टिवल ही नहीं हो रहा है जिसमें दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब दैट डजंट एक्साइट मी। आई मीन विद ऑल द एफर्ट्स दैट यू पीपल आर मेकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि वो तो होना ही चाहिए। मतलब यूनिवर्सिटी इज नोन बाय द फैक्ट। तो जब आप जेएनयू को, दिल्ली यूनिवर्सिटी को या ये सब आईआईटीज को कभी क्रिटिसाइज करें तो आप ये सोच लीजिए कि वहाँ ये सब होता है, वहाँ रेगुलरली ये सब हो रहा है, वहाँ पे लोग ये फ्रीडम दिया है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वही सब लोग कर रहे हैं, और यहाँ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बट आई थिंक दैट कैन बी टेकन टू अ नेक्स्ट लेवल, you know, to the next level. Second thing is fundraising. I think that should be left to the HODs. I think all the HODs should make sure that their departments become completely self-financeable in what way they can do it. I think they are better, learned people than I am, but I think they should look at this. Second thing is tapping off the huge CSR fund. ये जो corporate social responsibility के funds जो government ने दिए हैं, I think we should do something very urgently. Every university to try to get those funds to their university, have a chair with maybe a family-owned business who sponsors, like in Harvard or all these other universities where we see that one family is doing some charity or some kind of a thing and funding some kind of a genuine research in a university. I think that is a lot of scope. That's why I said sports की बात करते हैं तो I think मैंने आपने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन में बताया कि आप BDS हो, आप अभी हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर रहे हो या आप किसी कंपनी में मैनेजमेंट देख रहे हो, तो मेरे पास मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डिग्री इनिशियली नहीं थी। 25 साल की उम्र में मैं इसमें आ गया। सो हाउ डिड आई लर्न मैनेजमेंट इज बिकॉज मैं बास्केटबॉल खेलता था, मैं नेशनल लेवल प्लेयर था बास्केटबॉल का और हरियाणा को रिप्रेजेंट करता था। तो वहां पे टीम गेम में हम जाते थे, हम लोग स्पोर्ट्स में थे और ये सब देखते थे, टीम वर्क समझते थे। आई थिंक मैनेजमेंट इज मोर और लेस अ टीम वर्क, राइट? सो इट हेल्प्ड अस। सो आई थिंक अ स्पोर्ट्स कल्चर इन द यूनिवर्सिटी, वी हैव सच अ ब्रिलियंट ground, we have such a brilliant ground with so many universities, acres of land we have lying vacant where there are no tracks, where outsiders are not allowed, where are no national events happening. So these are all the things that make a university very vibrant, and that, as I told you, it all has to start with paying the staff better. I think सबसे शुरुआत वहां से होनी चाहिए. I think I'll come back to the last leg of the lecture, which is about the National New Education Policy. It's a brilliant policy document. Obviously, if it is implemented only then. The three things that I basically liked about this, the Kasturi Ranjan committee, which gave its recommendation last year in 2019, is that there are three things that are happening. First is, next slide please. So if the flexible learning module I really loved, that first year में बच्चा आता है, first year में अगर बच्चा निकल जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, second year में बच्चा आता है और बच्चा उसके बाद किसी काम की वजह से नहीं कर पाता तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर तक अगर बच्चा, अभी हम कैसे बोलते हैं कि मेरे पास बच्चे आते हैं हॉस्पिटल में नौकरी करने के लिए, उनको पूछता हूँ कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो बोलता है कि या तो वो बोलेगा सेकंड 2i फेल या वो बोलेगा FY पास या कुछ भी ऐसा कुछ एक टर्म लेगा. सो नाउ एटलीस्ट द गवर्नमेंट हैज डन अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय टेकिंग दैट आउट. सो फर्स्ट ईयर के बाद आप सर्टिफाइड हो जाओगे, सेकंड ईयर के बाद आप डिप्लोमा हो जाओगे, थर्ड ईयर के बाद आप डिग्री हो जाओगे और फोर्थ ईयर के बाद आप डिग्री विद रिसर्च हो जाओगे, जिसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी. तो अगर आज की डेट में शायद मैं फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करूं तो आई थिंक न्यू पॉलिसी के बाद कर पाऊंगा. सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज ब्रिलियंट. सो फ्लेक्सिबिलिटी इज, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट नो मैटर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ईयर, the second year and the third year, even if you come back after 4 years, you can pursue directly go to the second year and the third year. So the government is also now going to expand the RTE, which is right to education. where पहले हमारे देश में 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन मैंडेटरी और फ्री थी. अभी गवर्नमेंट शायद उसको 3 साल से लेके 18 साल तक एक्सपैंड करने वाली है, which is going to be a game changer because हमारा ड्रॉप आउट रेशियो बहुत हाई था. तो सेकंड थिंग, द थर्ड थिंग इज आई थिंक जॉब सिक्योरिटी, जो हम बात कर रहे थे कि एड हॉक टीचर्स, और अभी कुछ शिक्षा मित्र की भी कुछ बात कर रहे थे, कुछ लोग की ऐसे भी कुछ पोस्ट होती हैं कि जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे 5 से 6 हजार रुपए देके टीचर्स को. तो आई थिंक वो सब खत्म होने वाला है. द लास्ट इज आई थिंक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन. आई थिंक ये एक लास्ट जो पॉइंट है, ये आई थिंक दिस इज व्हाट कैन चेंज द वे द यूनिवर्सिटीज वर्क. इट इज द ट्विन डिग्री प्रोग्राम, द डुअल डिग्री प्रोग्राम एंड द जॉइंट डिग्री प्रोग्राम. So this is one of the recent I think innovation, where in a joint degree the student can do his graduation from here, and at the same time he can take some credit point, which will be minimum 30% of the total credit point from a foreign university,
and he will get a joint degree, or he can simultaneously do a degree there along. So if he's doing BA in South Gujarat University, he can also do BA honors in Harvard and at the same time get 2 degrees, dual degree. So at the same time, during the same 3 years, twin degree, he's studying in South Gujarat University, but at the same time he works with that university and does some credit hours there. But university will be where he'll get his degree will be South Gujarat University. And joint degree is when he does certain number of credit points there. So he will get a degree which is South Gujarat University and that university combined. So dual degree, joint degree, and twin degree. These have just got I think clearance in the draft. So I think these are very good initiatives. I think this should be promoted. And I would like to, I think, finish my lecture here. I would not call it a lecture, but the story that I was trying to say. But I think sum up करेंगे तो there are a lot of chances. As far as funds are concerned, मुझे सच में ऐसा लगता है कि बहुत सारे changes आ चुके हैं education में. We should just think out of the box, get out of this mindset of teaching the students about this exam pass karna attitude should be stopped, and we should move ahead with the future. Again, I'd like to thank all the students, faculty members, and the management for giving this opportunity. And please apologize me because it's a very personal and comments and my observation that I made of the education system through my very own experiences. And I'm completely open for criticism. Thank you. Thank you so much. જી ધન્યવાદ. ડોક્ટર શિવનારાયણ કાલિયા સાહેબે આપણને ખૂબ સરસ રીતે આખી વાત કરી અને એમણે આને લેક્ચર નહીં પરંતુ એક સ્ટોરીના રૂપમાં એમણે આખી વાત મૂકી અને એમણે આખા વક્તવ્યના પ્રારંભથી જ જે આખી ભારતીય પરંપરાની જે શિક્ષા વ્યવસ્થાનો જે મૂળ હતો એ આધારના સંદર્ભથી લઈ અને વર્તમાન પ્રેઝન્ટ એજ્યુકેશન સિનારીઓ કઈ પ્રકારથી છે અને એની અંદર દેશ વિદેશની અંદર ભારતના લોકો કઈ રીતે અભ્યાસ કરવા જાય છે તે અને ભારતની જે વિશ્વવિદ્યાલયો છે એ વિશ્વવિદ્યાલયની જે કન્ડિશન છે, સ્થિતિ છે અને ટીચર સ્ટુડન્ટ રેશિયોની બહુ મૂળભૂત વાત કરી. એક મુદ્દો છે કે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 2020 આપણે ત્યાં અમલ પણ થઈ ગયો છે અને 2-3 મુદ્દાનું ધ્યાન પણ એક દોરીએ કે ભાઈ આપણી યુનિવર્સિટીએ ખૂબ સરસ ઇનિશિયેટિવ લઈને આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિનો અમલ પણ કરવા માટેની આખી સમિતિની ગઠન પણ કરી છે અને જે ફર્સ્ટ યર, સેકન્ડ યર, થર્ડ યર પૂરું કરે એટલે સર્ટિફિકેટ, ડિપ્લોમા અને ડિગ્રી એ પ્રકારની આખી એક યોજના જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ છે એના સંદર્ભે કરી છે. એટલે ખૂબ આનંદની વાત છે કે ભાઈ જે લેક્ચર સિરીઝની અંદર આપણે જે આજે ચર્ચા કરીએ છીએ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ આપણી યુનિવર્સિટી પણ એની બહુ ત્વરાથી એ કરી રહી છે. આ વિષય જે છે વિષય ખૂબ ગહન છે અને એના વિષયના વિચારના જે વમળો છે અનેક દિશામાં જઈ શકે એવા છે અને એના માટે ખૂબ ચર્ચા પણ થઈ શકે. સમયની મર્યાદાને સાથે લઈને આપણે કાર્યક્રમના સમાપન તરફ જઈએ છીએ. ભારત વિકાસ પરિષદ તરફથી સંયોજક તરીકે આપણી યુનિવર્સિટીના એચઆરડીના પ્રોફેસર એન્ડ હેડ ડોક્ટર કિરણ પંડ્યા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સમાપન કરે. Friends, you will agree with me that the value of 1 hour that we have spent with Dr. Kalia has been enhanced and rewarded. I take this opportunity to express my profound thanks to Honorable Vice Chancellor Dr. K.N. Chawdaji. I also express my gratitude to our very learned speaker, Dr. Shivnarayan Kaliaji. He is very aptly, and I think he spoke from his heart and experience. He mainly focused. His main focus was quality of education. He was concerned about the quality of education. And then he expressed his views how to improve the quality of education through recognition of talent of teachers and autonomy, freedom of expression, and many other things. So here in Gujarat also, we have a Pannalal Patel. He got Gnanpith Award.
but I'm sure he could not have been appointed as a professor or vice chancellor or anything. I think he studied up to 7th standard only, and he got a non-pit award. He could not have been appointed. Sir, our system is flexible, but then it's an attitude that prevents a flexibility. You might have heard about Professor Brahmananda. He was a noted economist. He did a PhD after graduation. After obtaining bachelor degree from Bombay University, he did his PhD. Kirit Parikh, he was a member of Planning Commission. He had a master's degree in engineering, but PhD in economics. So our system does have a flexibility, but then it varies from institution to institution. I think some of your words were like listening to music. You know, I was very happy that when you talked about the university as a temple of learning and about the freedom should be given to teachers and all these things. I personally liked your thoughts very much. So for this, I express my profound gratitude on the behalf of our university and Bharat Vikas Parishad, and of course our National Service Scheme (NSS). I also would like to express my thanks and gratitude to our president of Bharat Vikas Parishad, Sri Rupin Bhai Pachigar. He is also very renowned speaker, and he took a special interest to. He in fact takes now a lot of interest in Bharat Vikas Parishad to organize different kind of activities in different walks of life. I think I must thank you, sir, for bringing Dr. Kalia to this university, because this university stands for acquisition and dissemination of knowledge. And this way of informal knowledge dissemination is one of the important activity of the university. And for that, I think our Honorable Vice Chancellor and the Registrar also should be thanked for that, because they are also providing platform to this kind of activity. Finally, I take this opportunity to express my gratitude to our in charge registrar, Dr. Jaideep Chaudhary ji, and Dr. Bharat Bhai Thakur ji, for organizing this wonderful event and helping us to accomplish it in a very wonderful way. And of course, thanks to our Darshan Purohit ji also for taking special interest in organizing this activity. Thank you so much. I thank audience also for being with us for 1 hour. Thank you so much.